सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द UK02 राइडर। एंड गाइस आज का ब्लॉग है BTS एक छोटे से बच्चे का बर्थडे में, उसमें हमको फोटोशूट करना है। एंड देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहता है। हमको जाना है यहाँ से ऊपर। हम भाई का वेट कर रहे हैं, भाई अभी आया नहीं है। सो विक्रम भाई ये हमारे विक्रम भाई, हेलो हेलो। तो भाई का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर। भाई पीछे स्कूटी में तेल पेट्रोल भरवा रहा था, तो हम आगे निकल गए। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। एंड अभी बच्चा रेडी कर रहे हैं बच्चे को। सो उसके फ़ोटो शूट करेंगे थोड़ा बहुत। एंड थोड़ा धूप जाने का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठ के। सो भाई को बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और हेलो भाई, तो शर्मा रहा है। ये भी पहुँच चुका है और हमने सब चार्ज लगा दिए यहाँ पर। देखो भाई, जल्दी नहीं है भाई की यार। तो हमने सब चार्जिंग लगा रखे हैं यहाँ पर। हमने ये खरीदा, ये भाई हमारे लिए बहुत बेनिफिट का काम कर रहा है। इसमें मोबाइल भी चार्ज आ रहे हैं हमारे आराम से, बहुत सारे पॉट है उसमें। तो भाई आप देख रहे हो, बने रहो पूरे वीडियोज़ के साथ। एंड अभी हम फोटो शूट करते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग। तो गाइस लाइक करना है यार अगर पसंद आई तो। सो गाइस यहाँ पे बन रहा है खाना। तो यहाँ पे अपने कप कोट के ही कारीगर लगे हैं। क्या अभी सीजन में क्या हाल होगा फिर? तो यहाँ पे है बर्थडे शूट होने वाला है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी प्लेस है यहाँ पर। पीछे बिक्की भी आ गया, बिक्की लोग बाहर आ गए। बिक्की भाई क्या कर रहे हो? तो भाई मौसम देखो यार, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? धूप चल रही है। उधर खाना बन रहा है, आज खाना ये खाएंगे टेंट में। भाई हम है वेडिंग फोटोग्राफर, हम टेंट में अब तो खाते रहेंगे लगातार। और पेट खराब होता भी भाई टेंडे खाने से। हमारा नहीं तेरा होता है, हम फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। हाँ भाई मैं टेंडा खाना बहुत कम खाता हूँ। और सो भाई चटपटा रहता है काफ़ी ज़्यादा, मसाले वगैरह। सो मैं कम ही खाना खाता हूँ। एंड ये लोग तो बहुत खा जाते हैं दबा के। कौन? ये लोग तो दबा के खाते हैं। मैं कहाँ खाता हूँ दबा के? क्यों? मेरी डाइट कम है, वेट कम करना है ज़्यादा हो के। हैं 80 kg था, 75 की है। 80 kg? इसका कितना का फिर? इसका भी होगा 80 तक। नहीं अभी तक तो मैं कभी नहीं पहुंचा। अबे तो ना पाई कब है? क्यों नहीं ना पाया? कितना है? 65 किलो? नहीं इतना ही है, बोल दे कहीं 69 70। सो गाइस अभी हम लंच कर रहे हैं। दिन में लंच किया नहीं हमने। और वहाँ पे वाइट कुत्ता, ले आजा आजा, ले लालू टॉमी। सो वेडिंग के ब्लॉग भी आएंगे, वेडिंग के BTS सीन भी आएंगे, वेडिंग के BTS शूट भी आएंगे, सब आएगा। सो वहाँ पर बिल्ली रानी है। ले मुस्सी मुस्सी, आजा आजा आजा, मुच्चू मुच्चू। सो गाइस काफ़ी अच्छे फूल लगा रहे हैं यहाँ पर यार। और ये हाजिरी का फूल बोलते हैं हमारे वहाँ पहाड़ों में। सो गाइस हमने खाना वाना खा लिया है। और अब पता नहीं कार्यक्रम कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट नो। सो हम कार्यक्रम का ही वेट कर रहे हैं। टाइम हो गया 3 बज गया, 3 आप देख लो 3 बज गया टाइम। तो अभी तक कार्यक्रम स्टार्ट।
living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many. Come. आजा मिस्सी ये देखो कैमरा देखो। ये देखिए ये सो गाइस हमारा सारा काम हो चुका है एंड अब हम केक काटने जाएंगे। तो इतना क्लोज मत चिपको भाई, ये मेरा ही ब्लॉग है, मैं काट भी सकता हूँ इसको। सो चलो लेट्स गो। आजा ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? मैं पीछे जा रहा हूँ। Not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get back?